पाइथन प्रोवाइड एन ओपन फंक्शन। पहले मैं ये सब डाटा बता देता हूँ, फिर कल हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कहता पाइथन प्रोवाइड एन ओपन फंक्शन दैट एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट फाइल नेम एंड access mode in which the file is accessed. The function return the file object which can be used to perform various operation like reading and writing. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ पहले डायरेक्टली, और आप देखिएगा पहले। पहले ये वाला एग्जांपल देखिए। ये कह रहा है कि जो हम फाइल को ओपन करते हैं पाइथन के अंदर, एक ओपन नाम से एक फंक्शन होता है, ठीक है। जब ओपन नाम से फंक्शन के अंदर हम एक फाइल को रीड करते हैं, जैसे कि इसने रीड किया, फाइल का नाम रखा फाइल टेक्स्ट। तो फाइल टेक्स्ट नाम की फाइल है जिसको हमने, आर का मतलब है रीड करना। देखिए आपके पास कोई फाइल है, फाइल का मतलब है कोई डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, या तो डॉक्यूमेंट को राइट करेंगे, यही तो मतलब हुआ। तो कह रहा फाइल हैंडलिंग में आप ओपन फंक्शन के अंदर एक फाइल का नाम लिखिएंगे जिसे आप रीड या राइट करना चाहते हैं। इन अ फाइल हैंडलिंग we have to either read data from a file or write a data in a file. So in there is a one function called open in a Python in which we have to give two values. One value will represent the file name in which we want to operate. Second, the operation we want to perform on the file. For example, R is the mode, M-O-D-E mode. Mode mean what we want to do from file. For example, file.txt signify that there is a one file named file.txt. Here txt is the extension. I hope you aware the term of extension. And R is the read mode. That means we want to open the file in a read mode. Okay, we did not want to write something, but we just want to read the file. Then function name is open, and when a file successfully Python function open, then a variable name file pointer is assigned to it. File pointer you can understand in a very logical, it is a cursor actually. With the help of a file pointer you can treat it as a cursor. So file pointer will tell you in which line you are currently present, or which character you are currently reading. This is the purpose of file pointer. Okay.